सर जय भोसले सामना रंगतोय मैदानावर गणपती वॉरियर्स वज्रेम क्रिकेट संघ विपक्ष साई क्रिकेटर्स केरेम या दोन तगडे संघ मैदानावर एक सामना विजयी होऊन एका बाजूला अपाली कलंगुटकर नेतृत्व करतोय गणपती वॉरियर्स वज्रेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून आणि त्यानंतर मैदानावर केरेम क्रिकेट संघ या मैदानावर सकाळच्या सत्रामध्ये रजत कुडाळकरच्या 88 धावांची बहारदार केली त्याच्या साथीला या मैदानावर एका बाजूने एष्ट्यांच्या मागे उभा आहे त्या रुपेश शिवजीची सुंदर देखणेलायक खेळी आपण बघायला मिळाली। पंचांचा सामना सोडण्याचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय। कमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडनं समीर सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर आणि स्ट्राईकला रजत कुडाळकर आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला सलील नाईक उर्फ मुन्ना सज्ज झालाय। पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक पहिला चेंडू फुल टॉस मध्ये चेंडूवर खराब चेंडूवर आक्रमण केलं रजत कुडाळकरचा हात पहिला चेंडू फुल टॉस मध्ये चेंडूवर खराब मोर तगडा संघ आहे आणि तगड्या संघासमोर सुरुवात ही तगडीच करावी रजतला माहिती आहे। संयमी क्रिकेट आहे त्याच्याकडे पहिला चेंडू थोडासा ऑर्मअप पद्धतीचा होता। ऑर्मअप पद्धतीच्या चेंडूला चुकीला माफी नाही आहे आणि चुकीला माफी नसल्यानंतर या मैदानावर मोठ्या फटक्याला स्वागत केलंय समीरचा आपण पाहतोय। हलक्या हाताने घेऊन काढल्या स्क्वेअर कटचा फटका क्षेत्ररक्षक आलाय वेगाने पहिल्या प्रयत्न थोडासा स्वतःला सावरलाय परतीची फेक केली आहे तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या संयमी क्रिकेट रजत कुडाळकरकडे चांगल्या चेंडूला सन्मान खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर टोलवायचा आहे या रणनीतीने खेळतोय मैदानावर दुपारचं सत्र आहे कडक उन्हात दोन तगडे संघ लढत करतायत एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावपलकावर 7 धावा धावपलकावर। बैठक फटका देखनेलाय फटका सुंदर नेत्रदीप पद्धतीचा फटका सलील नाईक उर्फ मुन्ना आणि मुन्नानं मैदानावर चौकाराने आगाज केलाय का देखनेलाय फटका सुंदर नेत्रदीप पद्धतीचा फटका आगाज केलाय आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 11 धावा धावपलकावर। स्विच फटका स्विच हिटला या मैदानावर टॅनचा आवाज करून दिला फटका मुन्ना ऑन फायर 4 धावांची गुण पंचांची फटका स्विच हिटला या मैदानावर टॅनचा आवाज करून दिला फटका मुन्ना ऑन पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येणारा चेंडू असेल फ्री हिट पुन्हा एकदा रिप्ले मैदानावर बघण्यासारखा होता मुन्नाचा सेल जरूर टिपलं होतं पण अतिरिक्त उंची घेतलेला चेंडू गोलंदाजाला दंडात्मक केलाय आणि दंडात्मक केल्यानंतर येणारा चेंडू असेल फ्री हिट बोनसच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येने 16 धावा धावपलकावर
ज्या धावा पाहिजे सुरुवातीला अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांमध्ये ताबडतोब फलंदाजी करावी, धावा पहिल्या 2 षटकांमध्ये जमवाव्यात, ध्रुव ओव्हरमध्ये धावा जमवाव्यात, हे इरादे आहेत. गती परिवर्तन प्रीटचा चेंडू आपण बघितलाय, आडव्या बॅटने घेऊन काढलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, एकेरी धावसंख्येने समाधान मानलाय. षटक क्रमांक पहिल्या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर 17 धावा, धावफलकावर 17 पे खतरा. हा कोणाला असेल मैदानावर. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे. अंतरिम चेंडूवर रजत कुडाळकर दिमाखात स्वागत करेल की प्रतिस्पर्धी संघाचा गोलंदाज रजत कुडाळकरला आपल्या चतुराईनं गोलंदाजीनं नाचवेल. मॅच हलकीशी कट लागली होती मैदानावर. 17 पे खतरा हा फलंदाजाला होता. गती परिवर्तन केलं होतं. आवाज हलकीशी धुंद ऐकायला आली होती. थोडासा चेंडू पुढे पडला. रुपेशनं ताकद लावली होती मैदानावर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 17 धावा धावफलकावर एका जीवदानावर रजत कुडाळकर खेळतोय. दुसऱ्या बाजूला चौकारांची लायलूट करणारा सलील नाईक उर्फ मुन्ना मैदानावर. आणि गोलंदाजी मार्कवर कोणाची वर्णी लागते आहे. साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून गोलंदाज आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं सुरुवात करेल दुसरे अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विशाल आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅच हलकीशी कट. नो मॅच लांब चेंडू विसवला. सुंदर आणि बिटवीन विकेट चोरटी धाव टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून रजत कुडाळकर आणि मुन्नाची आपल्याला बघायला मिळाली आहे. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 18 धावा धावफलकावर. मोठा फटका. सुंदर देखणारा फटका. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. दिमागात फटका. विशालचं स्वागत एका मोठ्या फटक्यानं. सुंदर देखणारा फटका. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. दिमाग सुंदर देखणेला फटका. कव्हरच्या डोक्यावरून रेतो क्रिकेटची आठवण करून देणारा नजाकत वाला फटका आपण बघितलाय मैदानावर. रजत कुडाळकर देखणेला फटका. कव्हरच्या डोक्यावरून रेतो क्रिकेटची आठवण. आडव्या बॅटनं देखणेला फटका. डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. पंचांचे हात उंचावले आहेत. षटकाराची नोंद
3 चेंडूवर 3 षटकारांच्या आतषबाजी. रजत कुडालकर ऑन फायर. फटका डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. चेंडू सीमा रेषा बाहेर गेलेत विशालने. सुंदर चेंडू वाईट यॉर्कर काढण्याचा प्रयत्न. त्यावेळेसाठी नकार आला. डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न होता. एकेरी धावसंख्या रूपांतर झाले. पहिलं प्रथमतः धाव न घेण्यासाठी कॉल आला होता. मुन्नाला थोडासा धोका होता. मुन्नाने धोका पत्करत पुन्हा एकदा झालेली चूक या मैदानावर. आणि त्यानंतर एकेरी धावसंख्येने सांख्यिक धावपलकावर 37 धावपलकावर. खास सोनुर्लेवर आमचे राज सोनुर्लेकर पोहोचले आहेत. आमच्या पेंडेम प्रीमियर लीग मध्ये आपलं पण स्वागत आहे. बैठा फटका टोलवायचा होता. टप्पा पडल्याने चेंडू थोडीशी उंची घेतली आणि त्याचा शरीरष्ट आढळला आहे. षटक क्रमांक 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ आज समाप्त झाला आहे. आणि सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 37 धावा धावपलकावर. दोन षटकांचा खेळ समाप्त. 37 धावा धावपलकावर. रजत कुडाळकर स्ट्राईकला. गणेश कुबलचं स्वागत मैदानावर षटकारानं केलंय. रजत कुडाळकरनं वाईट यॉर्कर काढायचा प्रयत्न, दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूला पाहिलं रजतनं. गणेश कुबलचं स्वागत मैदानावर षटकारानं केलंय. रजत कुडाळकरनं स्वागत मैदानावर षटकारानं केलंय. रजत कुडाळकरनं वाद केले आहे. सलग 3 चेंडूवर 3 मोठे फटके टोलावले विशालवर. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा तीच सुरुवात. 43 धावा धावफलकावर. शॉर्टम पुल सक्सेसफुल. डीप स्क्वेअर लेगला खेळाडूला हाय हॅलो करे चेंडू लेग ब्रेक करायचा होता गणेश कुबलला. थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू या मैदानावर. आणि रजत कुडाळकर या मैदानावर ऑन फायर. सांघिक धावपलकावर. शॉर्टम पुल दिली आहे. चेंडू सीमा रेषेबाहेर निघालाय. दिली आहे. चेंडू सीमा रेषेबाहेर निघालाय.
अर्धशतक पूर्ण होत सांघिक धावफलकावर 53 धावा धावफलकावर. सोडून दिला तो चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंचाने दंडात्मक केले गोलंदाजाला. अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येने 54 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. सुंदर देखनेला पटका कव्हरच्या इशारा प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी तैनात आहे. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही झोकमी धावसंख्येकडे वळली. पहिल्या प्रयत्नात थोडासा क्षेत्ररक्षक फ्रंबल झालाय. परतीची फेक करेपर्यंत एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये झालाय आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर अब तक 56 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. गणपती वॉरियर्स ओसरम क्रिकेट संघ या मैदानावर लढत करत असताना रजत कुडाळकर ऑन फायर. पुन्हा एकदा देखण्याला फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय. भरपूर वेळानंतर निर्धाव चेंडूची गणना झाली आहे धावफलकावर. मोठा फटका बघायला मिळतोय. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू जवळ जवळ रजत कुडाळकर. 13 चेंडू मध्ये 50 धावांची बहारदार खेळी केला रजत कुडाळकरला. चेंडू पळी आपली बॅट उंचावून दाखवायला हरकत नाही आहे. कॅमेरामॅन समोर रजत कुडाळकर समोर दाखवायला हरकत नाही आहे. 13 चेंडू 50 धावांची बहारदार खेळी आणि या 13 चेंडूंमध्ये तब्बल 7 षटकार आणि 1 चौकाराची नोंद. रजत कुडाळकर टाळ्यांचा आवाज करूया. सांघिक धावफलकावर बघायला मिळतोय. पहिला चेंडू मोठा फटका सुंदर देखणारा फटका. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. सुंदर देखणारा आडव्या बॅटनं देखणारा फटका डीप मिड विकेटला. गणेश कुबलचं स्वागत मैदानावर षटकारानं केलं. शॉटम पोल दिली आहे. मोठा फटका बघायला मिळतोय. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षकाला हाय आकाश उर्फ डंबा खास करून कारण या कडक उन्हात सुंदर बॉल बॉईजचा जो काम करतोय आणि लगेच चेंडू मैदानामध्ये टाकतोय. मुन्ना सज्ज झालाय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं विशाल वांगणकर ओलंदाजी मार्कवर आपल्याला बघायला मिळतोय. खोलवर टप्प्या चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. मुन्नाला माहिती आहे चांगल्या चेंडूला सन्मान जायचा. स्ट्राईक रोटेट करायची आहे. समोर तगडा खेळाडू आहे. 13 चेंडू 50 धावांची बहारदार खेळी करत रजत कुडाळकर अजूनही मैदानामध्ये आहे. जे अशोकजी नाही पहिल्या दिवशी स्वप्न साहिल वांगणकरचं या मैदानाचं राहिलं आहे ते पूर्ण करतोय की रजत कुडाळकर. 100 धावांचं वैयक्तिक 2 या धावसंख्येनं शतकी खेळी हुकली. सकाळी 88 धावांची बहारदार खेळी केली आहे रजतनं. फटका फसलाय मैदानावर आणि रजत कुडाळकर माघारी परतलाय. नाराज आहे फटक्यावर. बॅटचं कुठेतरी हँडल सुटलं असं वाटतंय रजतच्या आणि त्यानंतर तो माघारी परतलाय. एक फटका फसलाय मैदानावर आणि रजत तेरा चेंडू 50 धावांची बहारदार खेळी करणारा नाराज होऊन माघारी परतलाय.
महत्वाचा गडी बाद केलाय. साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाच्या विशाल कामगिरी जरूर केली आहे, पण कमबॅक करावा लागेल. मोहित गावकर आल्या आल्या आक्रमक आहे. आडव्या बॅटनं फटका केलाय. जमनी लगेच डिप विकेट कडनं क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक तोपर्यंत मोहित गावकर एक धाव पूर्ण करत स्वतःचं खातं खोलतोय आणि सांघिक धावपलकावर 64 धावपलकावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच 2 हात समांतर करतायत. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 65 धावपलकावर. धावपलकाचा विचार केला सुसज्ज स्थितीमध्ये आहे. इथून पुढे सर्व खेळाडूंना एक जबाबदारी घेऊन खेळावी लागेल. मैदानावर रजत कुडाळकरनं पाया भक्कम केलाय. कळस मात्र उर्वरितच्या फलंदाजांना चढवायचा आहे मैदानावर. कोलवर टप्प्या चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय. आमच्या परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 66 धावपलकावर आपण पाहतोय. धावा कशाही येऊत पहिल्या प्रयत्नात गणपती वॉरियर्स वज्रम क्रिकेट संघाला प्रत्येक धावी लाख मोलाची आहे आणि ती कसोशीने घेण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही फलंदाज करताना बघायला मिळत आहेत. खोलवर टप्प्या चेंडू सुंदर कव्हरच्या इशारा फटका प्रोटेक्शन तैनात आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण पण केलंय आणि सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करणारी गोलंदाजी. पहिले 3 षटक्यामध्ये मोठी धावसंख्या खर्च केली. रजत कुडाळकर अक्षरशः गोलंदाजांवर तुटून पडला होता. मोठे फटकेबाजी त्याने केले. 13 चेंडू 50 धावा जमवल्यात आणि त्यानंतर फटका फर्स्टला हँडल सुटला चेंडू फळीचा आणि झेलबाजच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. आडव्या बॅटनं फटका बघायला मिळतोय. प्रोटेक्शन तैनात आहे ठिकाणी. एकेरी धावसंख्येनं मुन्नानं स्ट्राईक रोटेट करत षटक क्रमांक मैदानावर एका बाजूला गणपती वॉरियर्स वज्रम क्रिकेट संघ रजत कुडाळकर माघारी परतल्यानंतर मोहित गावकर आणि साहिल नाईक उर्फ मुन्ना यांची चेंडूफळी तळपेल काय आणि जास्तीत जास्त धावा जमतील काय हे धावपलकावर बघूया. ऐकूया आवाज सर अशोकजी नाईक. सामने दूर वाले चोर से समीर वेंगुर लेकर अपने बॉलिंग बार पर इस ध्रुव ओवर में 4 ओवर समाप्त हुए. 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है. मैदान पर एक अच्छी सुस्थिति में मैदान पर बल्लेबाजी दिखाई दे रही है. फुल टॉस गेंद, एक लेफ्टेड शॉट लॉन्ग पर फील्डर से दूर गेंद और जब तक लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 70 रन पर. 70 रन, 1 विकेट पर एकमात्र विकेट रजत कुडालकर जो खुद के व्यक्तिगत 50 रन बनाकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर ऑन साइड पर खेला गेंद फिर से थोड़ी हवा में, लेकिन कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए. देखना होगा रोकते हैं या नहीं फील्डर. और लगभग बाउंड्री लाइन पर काउ कॉर्नर पर गेंद को रोका. गेंद को उठाते थ्रो करते और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित. मोहित गावकर जो नए बल्लेबाज, सामने अब तक 2 चौके सलील नाइक के बल्लेबाजी में. और देखना होगा जो ध्रुव ओवर मैदान पर चलता हुआ. पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित रहे थे समीर वेंगुर लेकर जो 17 रन बनाए थे. उसके बाद 3 छक्के जो और एक ओवर महंगा रहा था 20 रनों का विशाल का. गणेश कुबल जिनके ओवर में बने 25 रन, वो भी थोड़े से महंगे साबित हुए इस मैदान पर. एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट, गैप में गेंद. फिर से देखना होगा फील्डर है गेंद के पीछे और लगभग मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते. फिर से एक बार दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए.
74 टोटल। थोड़ा सा हवा में मार बैठे, लेकिन ध्रुव ओवर चल रहा है मैच का, कोई फील्डर नहीं है बाउंड्री लाइन पर। क्या गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। हवा में मार बैठे, लेकिन ध्रुव ओवर चल रहा है मैच का, कोई फील्डर नहीं है बाउंड्री लाइन पर। क्या गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर। चला गया मैदान पर। और अपने बॉलिंग बार पर समीर वेंगुर लेकर अच्छा कमबैक। पिछले ओवर में सिर्फ 6 रन बने थे, जो चौथा ओवर था, और ये ओवर चलता हुआ 5वां। गति में परिवर्तन, धीमी फेंकी गेंद, बल्ले का अधूरे हिस्सा लगा, मिड ऑन पर फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा जो ध्रुव ओवर। 10 रन बने, 1 विकेट मिला इस ओवर में। 5 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ, और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 78, लॉस ऑफ 2 विकेट। 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। चुके गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 79 माफ कीजिए 79 79 रन 2 विकेट पर। 23 रन बनाकर आउट हुए सलील नाइक और रजत कुडालकर की शानदार 50 रन। स्ट्राइक पर सुचित, अच्छा शॉट, और गैप में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छा शॉट, और गैप में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। इस मैच के समाप्ति के बाद आकाश उर्फ डंबा, आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। कोई भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। ड्राइव किया इस बार, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
और गणेश कुबल राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने स्ट्राइक पर सुचित नांचे। फुल टॉस थोड़ा सा दूर से खेला, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, नो बॉल का इशारा और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए, यानी मिले टोटल 5 रन स्कोर के खाते में। दूर से खेला, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, नो बॉल का इशारा। गेंद थी लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला। फुल टॉस गेंद उड़ाया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। गेंद उड़ाया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। मिले 6 रन स्कोर के खाते में। इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, टूर्नामेंट के साथ आगमन होता हुआ सम्माननीय सर कोलवाड़ पुलिस स्टेशन उपनिरीक्षक आदरणीय सर राम साटेलकर, जिनका आगमन होता हुआ। सर राम साटेलकर, आपका कमेंट्री बॉक्स में से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत इस पेडने प्रीमियर लीग में। सर आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर बैठिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मंच पर बैठिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है। तो टोटल स्कोर हो चुका है अब तक 94। बॉल ओल्ड बॉल मुन्ना ओके। और ये मैच समाप्त होने के बाद डंबा आप मात्र तुरंत कमेंट्री बॉक्स पास आ जाइए। दोस्तों बात आसान नहीं है, ये इतनी धूप है मैदान में, और देखो कहां कहां से लाकर गेंद को ढूंढ कर लाते हैं। आपका पेडने प्रीमियर लीग में निश्चित रूप से आपका भी बहुत अच्छा योगदान है आकाश उर्फ डंबा। तो टोटल स्कोर हो चुका है 94 रन, 94 लॉस ऑफ 2 विकेट। 6 ओवर समाप्त हुए, आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है मैच का, और सामने बॉलिंग में परिवर्तन। 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर एक अच्छा टोटल बल्लेबाजी में गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम का सामने टॉस जीता साई क्रिकेटर्स केरी क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस उड़ाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक बैठक शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, और इसी के साथ गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम के उड़ाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक बैठक शॉट, गेंद चली डीजे 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 भूख लगी है डीजे वाले को, मालूम है दोपहर का समय है, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्त, सफलता मिलती हुई मोहित गांवकर, लेकिन डीजे वॉरियर्स वज्रिम जो मुकाबला रहा था प्रीतिका वॉरियर धारगढ़ के साथ, तो अपना पहला मैच साई क्रिकेटर्स ने जीता था दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम क्रिकेट टीम के साथ। तो दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। यह मैच दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और देखना है अब तक की अगर बात की जाए, एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर आउट होकर वापस मोहित गांवकर 9 पर खुद के व्यक्तिगत एक छक्का लगाकर, और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए अपाली कलंगुटकर। स्कोर 100 रन 3 विकेट पर।
सामने दूर वाले छोर से राजू केरकर, अच्छा शॉट, काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते और एक सिंगल पूरा किया। एक अच्छा ऑलराउंडर है राजू केरकर, आज थोड़ा सा धीमी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मालूम है स्लॉग ओवर में वो महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि तेज ज्यादा गेंद करने से शायद थोड़ी सी लाइन पर परेशानी होती है। ये सोचकर एक लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर सुचित नान से सामना कर रहे हैं। एक आक्रामक शुरुआत, 2 चौके अब तक, एक छक्का उनकी बल्लेबाजी में। ऑन साइड पर घूमकर मारा, गेंद हवा में स्क्वायर लेग पर। शायद थोड़ा सा पहले आगे निकले, बाद में रुके, नहीं तो कैच भी बन सकता था। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, 2 फील्डर, और जब तक दूसरे के साथ तीसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा तालमेल, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में और 3 बहुमूल्य रन स्कोर में। इस बार बॉलर के पास से गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग अप पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिला, 7वां ओवर जारी है, आने वाला 1 ओवर का खेल बाकी है और एक अच्छा टोटल बना रही है मैदान पर गणपति वॉरियर्स वज्री क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी, गेंद फील्डर को बीट करती हुई गेंद चली गई। 4 अच्छा शॉट ऑन साइड पर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी, गेंद नाइन, 109, 3 विकेट पर। दर्शकों में मैच का आनंद ले रहे हैं। रुशांक स्ट्राइकर्स के रवि बनारस, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रवि सर आपका कमेंट्री बॉक्स में से। अंतिम ओवर और बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स के ओर से आ चुके हैं, हनुमंत आ चुके हैं। फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा हवा में शॉट, एक बहुत अच्छा कैच मिड ऑन पर, और चौथे विकेट का पतन हुआ मैदान पर। में शॉट, एक बहुत अच्छा कैच। अपाली कलंगुटकर, सफलता मिलती हुई हनुमंत नार्वेकर को, जो अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, और सामने नए बल्लेबाज नितेश कांबड़ी उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। स्कोर रुका हुआ 109 रन 4 विकेट पर। अच्छी गेंद, फिर से एक बार भीतरी किनारा, मिड ऑन पर आते गेंद को उठाते तब तक एक सिंगल पूरा किया, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ नितेश कांबड़ी ने, और स्कोर को पहुंचाया 110, 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार स्कोरिंग की जानकारी धीरज पालियेकर और उनके साथ कुमारी त्रिवेणी सावंत, हमारे डीजे मैन संदीप किंदड़ेकर, टेनिस क्रिकेट .in से जो कैमरामैन आदित्य ओमकार सावंत,
इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल मिल गया स्कोर में। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद, लेकिन मिस टाइम शॉट। ओ, बहुत अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग अप बाउंड्री पर एक शानदार कैच। और इसी के साथ इस अभिषेक के जो फील्डिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और इस ओवर में ये 2 फुल टॉस पर 2 विकेट, लेकिन मिस टाइम शॉट। बहुत अच्छी फील्डिंग। मार पर ओवर द विकेट हनुमान नार्वेकर इस ओवर में अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ ये स्लॉक ओवर, अंतिम ओवर, जिस ओवर में अब तक 2 विकेट चटकाते हुए अपने लंबे रनअप के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद बॉलर के ऊपर से, और जब तक लॉन्ग अप पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा 112 रनों पर। 112 रन 5 विकेट पर। सामने उड़ाया और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। उड़ाया और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। छह रन मिले स्कोर के खाते में, और हनुमान नार्वेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर इस बार फिर से उड़ाया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर। तो आखिरी ओवर में लगातार अगली गेंद लेकर फिर से उड़ाया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर। और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 125 रनों का। एक बार फिर से छोटा सा ब्रेक, और जैसे इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में आप सुनेंगे आवाज जय भोसले और योगेश परब की। पहिला चेंडू फुल टॉस मध्ये चेंडू, फुल टॉस मध्ये चेंडू बैठ फटका, देख नेलाय फटका, स्विच हिटचा फटका, स्विच हिटला या मैदानावर टॅनचा आवाज, मोठा फटका, सुंदर देख नेलाय फटका, चेंडू सीमा रेष, सुंदर देख नेलाय फटका, कव्हरच्या डोक्यावरून रेतम क्रिकेटच्या आडव्या बॅटनं देख नेलाय फटका, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक गणेश कुबलचं स्वागत मैदानावर षटकारानं केलंय। रजत शॉर्टम पुल सक्सेसफुल दिली आहे। मोठा फटका बघायला मिळतोय, लॉंग ऑफ चड्डो फटका फसलाय मैदानावर, आणि रजत थोड़ा सा हवा में मार बैठे, लेकिन ध्रुव ओवर चल रहा है मैच का। सुचित
अच्छा शॉट और गैप में फुल टॉस थोड़ा सा दूर से खेला। फुल टॉस गेंद उड़ाया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद। फुल टॉस उड़ाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। डीजे 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 अच्छी गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, क्या दूसरे रन। फुल टॉस गेंद थोड़ा सा हवा में शॉट, एक बॉल। फुल टॉस गेंद लेकिन मिस टाइम शॉट। सामने उड़ाया और गेंद लेकर इस बार फिर से उड़ाया वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी सिक्सर। धन्यवाद अशोक। चलिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको कहीं पेनल्टी समय के चलते ना मिले। कृपया आप जल्द से जल्द मैच को शुरू कीजिए। और चलते मैदान पर 124 रन बनाए इस प्रतियोगिता का अब तक का, इस साल का ये हाईएस्ट टोटल है। 124 जीतने के लिए 125 रनों की आवश्यकता। अंपायर का इशारा मुकाबला शुरू होने का। पहला ओवर लेकर आपाली कलंगुटकर, स्ट्राइक पर रुपेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर समीर वेंगुर लेकर। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए शुरुआत इस इनिंग की छक्के के साथ। पहली गेंद, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के और फुल टॉस में वो तब्दील हो गई और उसके लिए तैयार थे रुपेश। एक बड़ा शॉट और इस बार बल्ले को लगे ऊपरी हिस्से से रजत कुडलकर गेंद के ऊपर जाते। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, तुरंत थ्रो भी कर दिया। उसी एक्शन में थोड़े से बचे वहां पर खिलाड़ी। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान पर 125 रनों के जवाब में। आज के दिन नहीं, कल से लेकर 3 दिनों, तीसरे दिन का ये सर्वश्रेष्ठ टोटल है। अगर यहाँ पर ये चेस हो जाता है तो एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा इस मैदान पर। देखना है अपाली कलंगुटकर इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर वेंगुर्लेकर को गेंदबाजी करेंगे।
और इस बार उठाकर खेला है, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, सीधा नीतीश कांबळे को ढूंढ लिया। जहां पर खिलाड़ी तैनात था उसके सीधे हाथों में जाकर गेंद निकले। समीर वेंगुर लेकर गोल्डन डक के शिकार उतर वापस निकलते हुए पहला आघात 7 रन पर। उठाकर खेला है, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, सीधा नीतीश कांबळे। शॉट अच्छा था, लेकिन उस शॉट में थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई। खिलाड़ी को हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां तैनात थे वहीं पर सीधे उनके हाथों में पहले विकेट का पतन। और नए बल्लेबाज अभी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और आते ही बड़ा शॉट लगाना चाहा, खोद कर निकाली हुई एक गेंद थी। 1 रन तो जरूर निकलेगा। लगभग पॉइंट पर, डीप पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन और खाते में जुड़ा। कब तक खाता खोला गणेश कुबल ने और टोटल रन संख्या परावर्तित 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। 23 रनों का योगदान दिया रुपेश ने अपने टीम के लिए, जिसमें 2 छक्के 2 चौकों का समावेश। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वो कैच दे बैठे, जो कि हवा में खेला था, लेकिन बेहतरीन कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ पर देखने को मिला। अब देखना है गणेश कुबल के ऊपर काफी निगाहें होगी। गणेश कुबल क्या करते हैं अपने टीम के लिए। अभिषेक यहाँ पर दूर से खेला हुआ कवर की दिशा में, वहां पर अपाली कलगुटकर आपको दिखाई देते हुए स्क्रीन पर। फील्ड किया, तुरंत थ्रो कर दिया। 1 ही रन के ऊपर संतुष्टि। 1 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और टोटल पहुंचा 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर है प्रगति पर। 125 रनों का जवाब दे रही है ये टीम इस मैदान पर। शाही क्रिकेटर्स केरीम और जो कि मैच शुरू है गणपति वॉरियर्स वज्रिम के बीच में। अच्छी गेंद, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक कवर की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर से सीमा रेखा पार गेंद निकले 4 रन के लिए। गणेश कुबल का यह पसंदीदा शॉट चौके के लिए। ओवर समाप्त हो गया है तीसरा। 3 ओवरों का खेल, लेकिन बेहतरीन 38 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। गणेश कुबल ने एक चौका लगाया है, अपने आने की सूचना मैदान पर दी है। देखना है मोहित गांवकर किस तरह से गेंदबाजी करते। बल्लेबाजी में थोड़ा सा उनका प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन उसकी भरपाई गेंदबाजी में करना है, वो जानते हैं इस मैदान पर। और अच्छी गेंद टिप पकड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। मिस्त्री गेंदबाजी है, गेंदबाजी करते दोनों तरफ स्विंग करना जानता है ये खिलाड़ी, इसलिए इनको बुलाया जाता है बड़े बड़े प्रतियोगिता में। प्रदर्शन भी अच्छा करते हैं अपने टीम के लिए मोहित गांवकर। ओ फिर एक बार बल्ला जरूर घुमा रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब जब बिंदी गेंदी समाप्त हो जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर ये जो कि रन रेट, आस्किंग रन रेट बढ़ता चला जाएगा, दबाव अपने आप बल्लेबाज के ऊपर चलता जाएगा। इस बार जाने दिया, लेकिन ये काफी बाहर होने के कारण अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। पहली दो गेंदें अच्छी डाली थी, लेकिन ये थोड़ी सी बाहर की तरफ, टप्पा वही था लेकिन गेंद बाहर निकली वाइड के स्वरूप। ये काफी बार लगातार वाइड गेंद, दूसरी वाइड गेंद यहाँ पर मोहित गांवकर द्वारा। काफी स्विंग मिल रहा है, टिप्पा गिरने के बाद बाहर के तरफ निकल रही है। अब यहाँ निश्चित रूप से चौके छक्के ही चाहिए मैच में वापसी करने के लिए केरिम टीम को। और इस बार ये थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद, सिर्फ दिशा दिखलाई, एक बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया है 4 रनों का। अभिषेक के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक चौवे का। इस बार ये फोर 44 रन पर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है, एक ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट पर लगभग खिलाड़ी को बुलाया गया है और एक खिलाड़ी लगभग कवर पर। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश हवा में जरूर है, खुद मोहित गांवकर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच छोड़ दिया है। भागकर कैच लेने के लिए निकले जरूर थे, गेंद के नीचे आए भी जरूर थे, हाथ में गेंद गिरी थी, लेकिन इन मौके पर गेंद हाथ से फिसली और यहाँ पर एक जीवनदान मिला है अभिषेक को। गणेश कुबल अब स्ट्राइक पर आ गए हैं और इस हवा में के साथ टोटल जो के आगे बढ़ता हो 45 रन स्कोर बोर्ड पर 125 रनों के जवाब में। अब यहां से 80 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। लगभग प्रति ओवर 20 के ऊपर आपको ये आस्किंग रन रेट बनाना है, रन बनाने आपको ये मुकाबला जीतने के लिए। और थोड़े से अजब और गरीब तरह का ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद लगभग निकली सीमा रेखा के बाहर। 22 का इशारा अंपायर का था हुआ, 4 रन का। थोड़े से अजब और गरीब तरह की कोशिश,
भोसले 53 धावा धावपलकावर. अप्पाली आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर. ध्रुव ओव्हरचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. स्ट्राईकला डाव्या हाताचा अभिषेक आणि गणेश कुबल नॉन स्ट्रायकर एंडला. सुरेख गोलंदाजी वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी केली. अप्पाली फिरकी गोलंदाजी अप्पालीला माहिती आहे वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करणं पसंत करेल. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूर काढणं. 125 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. सुंदर फटका देखील फटका बॅकफुटला जाऊन फटका सजवलाय. चेंडू थांबत नाही. चेंडू जातोय तो मात्र सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी आहेत. 57 धावा या धावपलकावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आहे पण चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. 6 या धावसंख्येला अभिषेक ऑन फायर मैदानावर. सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 63 धावा धावपलकावर. 125 या धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा आहे. आक्रमण पसंत करेल स्ट्रायकर एंड कडनं. ध्रुव ओव्हरला सुरुवात झाली आहे आणि ध्रुव ओव्हरमध्ये या मैदानावर पहिला चेंडू निर्धाव. त्यानंतर फटकेबाजीला अभिषेकनं सुरुवात केली. चौफेर फटकेबाजीला 1 षटकार 1 चौकार 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. त्या साथीला गणेश कुबल 2 चौकारांच्या जोरावर मैदानामध्ये खेळतोय आणि फिरकीचा जादूगार थोडासा मागणा ठरलाय अप्पाली कलंगुटकर मैदानामध्ये. सुंदर गोलंदाजी. एक तेरी और एक मेरी नाही रंगली आहे मैदानावर. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता अभिषेकला. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 63 धावा धावपलकावर. षटक क्रमांक 5 हे प्रगती पथावर. पुन्हा एकदा कमबॅक करणारी गोलंदाजी मैदानावर अप्पालीची. गती परिवर्तन मैदानावर. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता. 2 खराब चेंडूवर 2 मोठे तगडे फटके आणि त्यानंतर झेलबाजच्या स्वरूपात डाव्या हाताचा अभिषेक बॅक टू द पॅव्हिलियन. मैदानामध्ये आहे. गणेश कुबलकडे क्षमता आहे. अमित गेलाय मैदानामध्ये. रुपेश सावजी लवकर माघारी परतला. 23 धावांची बहारदार खेळी गेली. 25 धावांची अभिषेकची खेळी आणि आता कार्य करावं लागेल ओव्हरसीज खेळाडूंना मैदानावर. मोहित गावकर सज्ज झालाय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कंट. षटक क्रमांक 6 आणि 6व्या षटकाला सुरुवात करेल. 18-62 हे समीकरण आहे. 125 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना स्विजिटचा फटका टोलवायचा होता. हा चेंडू व्यवस्थितरित्या चेंडू फळीला स्पर्श झाला असता तर 4 धावांची मोहर लागली असती मैदानावर. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू टाकणार इरादे पक्के गेले ते स्विजिटचा फटका टोलवायचा प्रयत्न सफल झाला. निर्धाव चेंडू धावपलकावर. सुंदर देख दिलाय फटका. घुटनात एक और सिक्सर देख डीप मिड विकेटला.
चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा नेत्रदीपक फटक्यानं मैदानावर बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका 6 धावांसाठी. गणेश कुबल ऑन फायर मैदानावर आक्रमण पसंत केलंय. मोहित गावकरवर बेस्ट वर्सेस बेस्ट दोन्ही तगडे खेळाडू मैदानावर दोन्ही ओव्हरसीज खेळाडू यामध्ये लढत करतायत. सांघिक धावफलकावर 75 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका देखणारा फटका. नितेश आला स्क्रीनवर. नितेशला हाय हॅलो करू चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. बॅक टू बॅक 3 मोठे फटके गणेश कुबलच्या बॅट मधून. हे मात्र देखणारे 3 मोठे फटके होते आणि 3 मोठ्या फटक्यांनी सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 81 धावा धावफलकावर. 18 चेंडू 62 धावांचं आव्हान आहे. 7 ते 8 मोठे फटके टोलवायचे होते मैदानावर. 3 चेंडूवर 3 मोठे फटके आलेत. उर्वरितचे चेंडू बाकी आहेत येणाऱ्या कालखंडामध्ये. 14-44. फुलटॉस फेवरेट फटक्यानं गणेश कुबलला 4 चेंडूवर 4 मोठे फटके देखणे लायक. 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. आणि मोहित गावकर मैदानावर महागडा ठरलाय. 5 चेंडू मध्ये 5 मोठ्या फटक्यांची आतषबाजी करणारा खेळाडू गणेश कुबल आपण पाहतोय. 3 चेंडूंवर 3 मोठे फटके टोलावले होते. आता मात्र गणेश कुबलचा वर्चस्व आहे. 5 मोठे फटके आपण बघितले आहेत. शेवटच्या 2 चेंडूंवर 2 मोठे फटके नितेश कांबळीचे. ते निर्णायक असतील की प्रतिस्पर्धी संघाचा गणेश कुबल या मैदानावर तुटून पडलाय. तो हा सामना समाप्त करेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रितेश आपण पाहतोय. अमित आहे.
12 चेंडू विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 5 मोठे फटके काम करतील. साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघासाठी 125 धावांचं भल्लं मोठं आव्हान घेऊन उतरलाय. पण आम्ही या आव्हानाला घाबरत नाही, कसं का होईना पार करणार हे इरादे स्पष्ट केलेत मैदानावर. डायरेक्ट हिट लागण्याचा प्रयत्न. गणेश कुबल निराशेनं माघारी परतलाय. धाव घ्यायची की न घ्यायची, घ्यायची की न घ्यायची दुधा अवस्था आणि त्यानंतर धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. धाव जरी थांबवली असते तरी संधी होती मैदानावर, पण ऐन मोकेच्या क्षणी साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघासाठी ही धोक्याची घंटा वाजली. थोडासा कॉल चुकलाय. चुकलेला कॉल पण गणेश कुबलच्या केसाठी 5 चेंडू मध्ये 5 मोठे फटके आपल्याला बघायला मिळाले. नवीन फलंदाज हनुमंत नार्वेकर आपण पाहतोय. समीकरण 11 चेंडू विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता. ताकद आहे साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये. फटका या मैदानावर मोठा फटका टोलवायचा होता. वेगावर सौरव गोलंदाजी प्रितेशनं केली आहे. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 94 धावा धावफलकावर. बैठक फटका टोलवायचा होता. कृष्णा सातपुते स्टाईलने फटका टोलवायचा होता. लेग बायच्या स्वरूपात एक धावी बहाल केली जाते. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 95 धावा धावफलकावर. 125 या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय मैदानावर. विजयासाठी 30 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. शेवटचे 2 चेंडूंवर 2 मोठे फटके, त्यानंतर 5 मोठे फटके आलेत. पण एका बाजूनं गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघानं ज्यावेळी गणेश कुबल धावचीच्या स्वरूपात बाद झालाय त्यावेळी कब्जा केला मैदानावर. एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळली आहेत. आणि या 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 97 धावा धावफलकावर. सोडून दिला होता ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. पंच 2 आज समांतर करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 98 धावा धावफलकावर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 99 धावा धावफलकावर. अजूनही 26 धावांची आवश्यकता आहे. 7-26. खराब चेंडू. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. 4 धावांसाठी आपण पाहतोय. षटकाची सांगता झाली आहे. चौकाराची नोंद आपण पाहतोय. 103 धावा धावफलकावर. उर्वरितच्या अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि उर्वरितच्या 6 चेंडूंवर येणाऱ्या कालखंडामध्ये 125 धावांचा पाठलाग करत असताना 22 धावांची आवश्यकता.
शेवटच्या 2 चेंडूंवर नितेश कांबळेच्या स्क्रीनवर आहे. नेत्रदीपक फटके त्यांना टोलावले. शेवटच्या 2 चेंडूंवर 2 मोठे फटके ते निर्णायक ठरतील येणाऱ्या कालखंडामध्ये. ते जर वाचवले असते तर मॅच बनली असती मैदानावर. 6 चेंडू 15-16-13चं समीकरण राहिलं असतं मैदानावर. आडव्या बॅटने फटकावण्याचा प्रयत्न होता. रजत कुडाळकर सज्ज आलाय. 5 चेंडू विजयासाठी 21. 5 चेंडू विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. 104 धावा या धावफलकावर. खोलवर टप्प्या चेंडू मोठा फटका या मैदानावर फसलाय. झेल टिपण्याचा प्रथमता प्रयत्न आणि शेवटच्या क्षणी तोल चुकला होता. हातातून चेंडू टाकला. पसंत केलं क्षेत्ररक्षकानं. कारण येणाऱ्या कालखंडात त्याला माहिती आहे विकेटपेक्षा धावा वाचवणं महत्वाचं आहे आणि ते त्यानं कार्य केलं. गती परिवर्तन ऐन मोकेच्या क्षणी ज्यावेळी फलंदाज शपल जर त्यांचे फिंगर रोल केले. आता समीकरण 3 चेंडू विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता. ते 2 मोठे फटके बरंच काही सांगून जात आहे साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाला येणाऱ्या कालखंडामध्ये. आडव्या बॅटनं फटका टोलवलाय. जरूर क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत. मॅच अजूनही संपलेली नाही अमितने सांगितलंय. सांघिक धावफलकावर 112 धावा धावफलकावर. 2 चेंडू विजयासाठी 13. जे नितेश कांबळेचे 13 धावा निघाल्या ते राहिलेत. 2 चेंडू मध्ये 13 धावांची आवश्यकता. पुढे सरसावत मोठा फटका ढोलवायचा होता. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी केली मोक्याच्या क्षणी. 1 चेंडू विजयासाठी 13 धावा. साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघासाठी प्रथम ते 2 मोठे फटके आणि त्यानंतर गणेश कुबल धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतला. बरंच काही सांगून गेलं येणाऱ्या कालखंडामध्ये. खोलवर सुंदर गोलंदाजी कुडाळकरची 13 धावांनी थांबवलंय. येणाऱ्या कालखंडामध्ये नितेश कांबळेचं नाईक सर 13 धावांचं योगदान हे गणपती वॉरियर्स अजून क्रिकेट संघासाठी भरपूर महत्वाचं योगदान ठरलंय. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 13 चेंडू 50 धावांची ज्यानं बहारदार खेळी केली मैदानावर. आतषबाजी दे दनादन फटकेबाजी ज्यानं केली तो रजत कुडाळकर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देतील सन्माननीय सर लक्ष्मीकांत नाईक. और इस बार ये थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद सिर्फ दिशा दिखलाई एक बॉल और थोड़े से अजब और गरीब तरह का ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद लगभग निकली सीमा. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. 3 येणाऱ्या कालखंडामध्ये पुन्हा एकदा नेत्रदीपक फटक्यानं मैदानावर बॅक